Question in everyone's mind right now. The viewers of India Today, of course, are discerning. They understand nonsense from news breaks and the truth. And that's the reason why you watch India Today, because we give you the truth as we report it. But the question in most people's minds watching this story right now is, did NCB Mumbai chief Sameer Wankhede actually foist this entire saga in order to demand 25 crore rupees from the Khan family, Shah Rukh Khan's family, to let off their son Aryan Khan? That's an explosive claim made by the main witness in this cruise drug bust case, Prabhakar Sale, who's also a former bodyguard of the bald guy who took a selfie, KP Gosavi, is what he has said, and he has put that complaint in front of the Mumbai crime branch. Now, independent witness Prabhakar Sale claims that 25 crore rupee was demanded on behalf of Sameer Wankhede, and that he also alleges that he was made to sign blank papers to facilitate this entire extortion racket. Mega face-off and fresh twist in Aryan Khan drug bust case. Explosive allegations of extortion bid and witness fixing. The spotlight on role of Narcotic Bureau. After an independent punch or witness raised serious charges. Prabhakar Sale, who is a former bodyguard of KP Gosavi, also a witness in Aryan drug case, exclusively told India Today that Gosavi sought a bribe of 25 crore rupees on behalf of NCB Mumbai chief Sameer Wankhede to let off Aryan Khan. He added that Gosavi and one Sam met SRK's manager Pooja Dadlani to demand bribe and agreed to settle for 18 crores, out of which 8 crore rupees would have gone to Wankhede. गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 सीआर, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। ये किससे बात कर रहे थे? ये सैम से बात कर रहा था। He added that the Narcotics Bureau made him sign blank papers, adding he did not see any drugs being seized. वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के। सालेकर तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए, उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना, मतलब सर ब्लैंक है। ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक सब ब्लैंक थे। वहां पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया, कुछ भी नहीं लिखा था। Prabhakar also shared a recorded video clip where Gosavi is seen holding a phone on speaker mode and making Aryan speak to someone. यही है केपी गोसावी आपके साथ में, वो आर्यन खान को किसी के बात करवा रहे हैं, शायद स्पीकर पे फोन है। किसके साथ बात कर रहे थे, सुन पाए आप? नहीं। क्या बातचीत, अंदाजा है कुछ क्या बात हो रही थी? कुछ भी नहीं। क्या आइडिया लगा सकता है? यहाँ से अगर मैं 10 फीट के दूरी से मैं अगर वीडियो निकल रहा हूँ और धीरे से अगर बात करें तो कैसे समझ में आएगा? The witness number 1 in cruise drug bust case also claims threat to life from Sameer Wankhede. मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके। ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ है, इसके लिए मैं फेस होना चाहता हूँ। फिर मनोज भाई संसारी ने मुझे मतलब हौसला दिलाया कि तू एक काम कर, मीडिया के सामने आ जा, तू टेंशन मत ले, हम लोग साथ में है तेरे घर। Sameer Wankhede spoke to India Today and called the charges sad and deplorable and promised a fitting reply. NCB came out saying the witness should have moved court with his prayer as matter is sub judice. Sources in the NCB were quick to refute the charges and promised legal fight against what they claim is a slur campaign.
They said that the witness has turned hostile and questioned his silence for 20 days. Sources in NCB also pointed out that allegations are similar to the ones made by NCP Minister Nawab Malik. 25 करोड़ रुपया क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो क्या बोला उन्होंने हाँ बॉन्ड डाल The explosive extortion claims putting a shadow over the Aryan drug bust and raising key questions on the case. The sensational allegations by Prabhakar Sahil has led to several questions. Question number 1. The NCB claims that Kiran Gosavi was an independent witness. Then how did he get access to the raid and even to Aryan Khan? Question number 2. Why was Prabhakar Sahil as a witness made to sign a blank Panchanama? Question number 3. Whom was Aryan Khan speaking to on Gosavi's phone? What was the conversation about? And question number 4. Who is this person called Sam who was present during that alleged meeting between Pooja Dadlani and KP Gosavi? With camera person Mangesh Amre, Kamlesh Sutar in Mumbai for India Today.